Good morning, everybody. My name is Khwahish. I'm coming from Dronacharya IS Institute. Let us continue with our daily newspaper analysis. Today, again, we are going to cover some important headlines from both leading newspapers, The Hindu and The Indian Express. Going forward, we will also discuss what the news article said, along with what are the important pointers for both films and mains point of view. Let us begin this exercise. First headline that we need to discuss. We all know our Prime Minister was in Kerala and he has initiated several reforms there. One of them was the launching of a new Amrit Bharat Express train for a different route. We need to revise facts about this scheme for both prelims and mains point of view. The Amrit Bharat Express. It was launched in 2023 by the Ministry of Railways. Now, why was this train launched? It was a long distance express train to make traveling affordable for our public. Now, how is it going to make it affordable for people? The main feature associated with it is non dynamic fare policy. Let me just quickly tell you what is the difference between dynamic fare and non dynamic fare. डायनामिक का मतलब होता है चेंज, फेयर दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल हमारी एयरप्लेन्स की टिकट्स दे प्राइस कीप राइजिंग एज एंड व्हेन वी बुक नियर टू द डेट्स. या फिर कोई पीक सीजन होगा, कोई फेस्टिवल सीजन होगा, तो हमारे टिकट के फेयर प्राइसेस आर वेरी हायर. उस वजह से दैट ट्रैवलिंग बिकम्स अनअफोर्डेबल फॉर अस, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते. नाउ रेलवे मिनिस्ट्री वांटेड टू चेंज दैट. हमारी कई सारी ट्रेन सर्विसेज में भी ऐसे ही होता है, जैसे कि शताब्दी एंड आर वंदे भारत एक्सप्रेस विच अगेन हैज बीन इन द न्यूज अ लॉट. टू चेंज दैट, इस ट्रेन में द फेयर प्राइसिंग इज नॉन डायनामिक इन नेचर. कैसे? इट इज क्लोज टू 500 rupees per 1,000 kilometers, whether it is during peak season or it is a non-peak season. Naturally, it is for festive and peak travel periods with heavy load capacity. जब लोड कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है तब हमारी टिकटिंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है एंड वी वांट टू टेक दैट बर्डन, दैट एज ऑफ आवर कंज्यूमर्स. इट इज ऑल्सो बिल्ट बाय द इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई. अगर आपको याद हो, द वंदे भारत ट्रेन्स वर ऑल्सो बिल्ट बाय द सेम फैक्ट्री. नाउ आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू अबाउट वंदे भारत, so it is imperative that we compare the two different trains in a quick summarized manner. राइट. अमृत भारत वर्सेस द वंदे भारत ट्रेन. सबसे पहले डिफरेंस है इनकी स्पीड्स में. द अमृत भारत हैज जनरल स्पीड while Vande Bharat was promoted as a semi high speed rail network. So comparing the two, the Vande Bharat train is a faster train services. Second, कोच की जो कैटेगरी है, यहाँ पे we have general compartments and sleeper non AC compartments. Sleeper, we all understand what a sleeper class is. We have benches where you can sleep through the journey. द जनरल कंपार्टमेंट आपने मूवीज में देखा होगा, जो जनरल डब्बे होते हैं जिसमें बहुत सारा क्राउड होता है, पीपल जस्ट सिट, यू कांट स्लीप ऑन दिस ट्रेन, दोज आर जनरल कंपार्टमेंट. वंदे भारत एक प्रीमियम रेलवे सर्विस थी, एक प्रीमियम ट्रेन थी, जहां पे एसी चेयर कार से स्टार्ट हुआ था एंड नाउ देयर आर न्यूअर वेरिएंट्स वेयर देयर इज एसी स्लीपर क्लासेस. बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, जब अमृत भारत इज ओनली अ नॉन एसी ट्रेन while वंदे भारत इज अ एसी ट्रेन कार. Second difference was speed, again which we already discussed. ये एक general speed है up to 130 km per hour, but the Vande Bharat speed is for higher speed, semi high speed rail network है which goes up to 160 to 180 kilometers per hour potential. Then we can compare them on the basis of the distance. Amrit Bharat is designed specifically for longer distance journeys, जबकि Vande Bharat is for medium distance journeys. Those were the main differences. Let's move to the second news headline. Then, in the same set of initiatives announced in Kerala, our Prime Minister has also announced the launch of PM Swanidhi credit cards. ये क्रेडिट कार्ड समझने के लिए we need to understand the Swanidhi scheme. अगर आपको याद हो तो on Telegram we used to do an initiative called One Day One Scheme which is still ongoing. हमने उसमें एक स्कीम डिस्कस की थी बाय द नेम ऑफ पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना.
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस स्कीम के अंडर हम एक कोलैटरल फ्री वर्किंग लोन प्रोवाइड कर रहे थे टू स्ट्रीट वेंडर्स हु लिव्ड इन अर्बन एरियाज या फिर रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज विच वर इन अ डिफाइंड अर्बन लोकल बॉडी. उनको हम एक कोलैटरल फ्री बिना गारंटी के वर्किंग कैपिटल का प्रोविजन कर रहे थे. अब ये प्रोविजन कुड बी एक्सटेंडेड अप टू 50,000 रुपीज इन डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन. स्टार्ट ऑफ एज 10,000 देन 20,000. अगर उसकी रीपेमेंट हो जाए उसके बाद वो 50,000 रुपीज तक पहुंच सकता था. इसी स्कीम को और एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने लॉन्च किए हैं स्वनिधि क्रेडिट कार्ड्स. वी ऑल नो व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड. आपके अकाउंट में पैसे ना भी हो तो भी आपको बैंक कुछ पैसे लेंड कर सकता है थ्रू अ कार्ड. Now this same application, this same provision is being provided to Swanidhi beneficiaries. हम उन beneficiaries को जिन्होंने already एक लोन स्वनिधि के अंडर अवेल करके उस लोन को रीपे किया है, उन्होंने इतना ट्रस्ट फैक्टर बैंक के साथ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री के साथ इस्टेब्लिश कर लिया है, उन्हें हम ये एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं. अब उस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट, इट इज अ यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड. यूपीआई से लिंक्ड है और इसके अंदर हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ₹10,000 अप टू एन अपर लिमिट ऑफ ₹30,000 फॉर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस. अब होगा क्या, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लेट्स से देयर इज एन आइसक्रीम वेंडर, कोई नारियल पानी वाला है, उनको भी कोई ना कोई इमर्जेंट बिजनेस नीड है. फॉर एग्जाम्पल हियर इन चंडीगढ़ आजकल थोड़ा सा विंडी हो गया है, देयर इज हैवी रेनफॉल फॉर दिस वीक. तो उस केस में हो सकता है उनका ठेला खराब हो जाए, अब इमीडिएटली उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है. इन दोज केसेस फॉर इमर्जिंग बिजनेस नीड्स the person can use their UPI linked RuPay credit card under this scheme. इस क्रेडिट कार्ड की यूज को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एडेड फीचर्स डाले हैं. फर्स्टली, इट इज अ फ्री कार्ड. हम भी जब क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं तो उसके बहुत सारे चार्जेस हैं कुछ ज्वाइन करने के. देयर विल बी एन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज. जस्ट टू यूज इट हमें कुछ चार्ज दे करना पड़ेगा. इट इज अ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड. कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए जाएंगे. उसके बाद जब हम क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, उससे कुछ चीजें खरीद के हम उस पैसे वापस करते हैं, एक इंटरेस्ट चार्ज होता है. बट अंडर दिस कार्ड अप टू 51 days अंडर डिफरेंट कंडीशंस फॉर डिफरेंट बेनिफिशियरीज देयर विल बी अ सर्टेन पीरियड जहां पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. Thirdly, there are additional cash point awards. There will be given some reward points जिनको रिडीम करके कोई भी कैशबैक की टाइप की प्रोविजन ले सकता है. ऑल ऑफ दिस इज टू हेल्प स्ट्रीट वेंडर्स एंड हेल्प देम बिकम बिजनेस पीपल, हेल्प देम सॉल्व एनी इमर्जिंग बिजनेस क्राइसिस. Let's move to the next news. United States has completed its withdrawal from WHO, World Health Organization. Now, what is World Health Organization? It is a specialized agency under the United Nations formed in 1948. एक specialized agency है under UN. अब specialized agency है यानी उसका कोई specialized job है. What is that specialized job? इसका job है to promote health overall internationally. It is the highest authority which keeps health as their agenda. It also serves the vulnerable. Who are the vulnerable? Who are at risks for several health related causes. ये WHO का overall mandate है, overall objective है. USA was one of the founding members of WHO in 1948 and currently it was also the largest financial donor. वो सबसे ज्यादा डोनेशन WHO का जितना भी बजट है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यूज्ड टू कम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. This is the first time that a country has withdrawn from membership of this agency. Now, legally क्या requirement है? Legally, for any country to withdraw from WHO, from its obligations, from its provisions, from its services, उसे 12 months का नोटिस देना पड़ता है. जैसे हम रिजाइन करने से पहले कोई कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, वैसे कंट्री को भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में WHO से विड्रॉ करने के लिए 12 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है. दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन 2025. जनवरी 2025 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया था. दे हैड इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल.
अब इस प्रोसेस के बाद उन्होंने 12 महीने का नोटिस सर्व किया एंड दिस जनवरी ऑफ 2026 this process is complete and US has legally completed its withdrawal process. Now why is United States of America doing this? United States का ये कहना है, उनका ये जस्टिफिकेशन है कि ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक डब्ल्यूएचओ का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था, उन्होंने उस क्राइसिस को हैंडल नहीं किया जो डब्ल्यूएचओ का एक्चुअल मैंडेट था. इट लैक्ड द नेसेसरी रिफॉर्म्स एंड डिड नॉट represent independence from political pressures. यूएसए का मानना है कि वो जिस भी कंट्री उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी स्वे में, उनके इन्फ्लुएंस में डिसीजंस ले रहे थे, अनलाइक व्हाट इट शुड डू. उसको इंडिपेंडेंटली उस पैंडेमिक को हैंडल करना चाहिए था, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग एंड दैट इज देयर जस्टिफिकेशन ऑफ विड्रॉइंग. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द implication of such a withdrawal, because we just saw that USA is the largest financial contributor. अब इसका implication क्या होगा? सबसे पहले there will be a funding gap. US is the largest financial donor. 18 to 20% of WHO's budget comes from United States of America. अब USA के withdrawal के बाद there will be a funding gap which has to be filled by some means, and it is not clear as to what means or what ways WHO will adopt. उसके बाद ये geopolitical shifts भी indicate कर सकता है. यूएसए के विड्रॉल के बाद वी डू नॉट नो अगर यूएसए के प्रेशर में या यूएसए के इन्फ्लुएंस में देयर माइट बी सम अदर कंट्रीज दैट स्टार्ट टू विड्रॉ और दैट स्टॉप participating, stop cooperating in WHO initiatives, which could lead to other health risks in our country and in countries all over the world. So what are those risks? पहला, loss of data and surveillance access. अभी क्या होता है, यूएस के पास बहुत ज़्यादा डेटा है, इट इज़ अ वेरी एडवांस्ड इकोनॉमी, दे हैव डेटा रिपोजिटरीज, दे हैव फंडेड रिसर्च, दे हैव द ह्यूमन कैपिटल टू इन्वेस्ट इन डिजीज रिसर्च, इन हेल्थ रिलेटेड रिसर्च. अगर यूएस विड्रॉ करता है तो WHO एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द इंटायर वर्ल्ड विल बी एट अ लॉस ऑफ दैट डेटा. Additionally, decision weakens global outbreak response and could hinder US preparedness. ना ही वो यूएस की प्रिपेयर्डनेस फॉर अ फ्यूचर पैंडेमिक, लेट्स से कोविड जैसा कोई और पैंडेमिक फ्यूचर में अगर आता है तो वो पूरे ही वर्ल्ड की प्रिपेयर्डनेस को हैम्पर करेगा, बिकॉज यूएसए being such a big economy, such an influential economy, it could hold the world together with the help of the WHO in preparing for such responses. Now with the US withdrawal, all of that is uncertain. So that is one news that is going to be talked about a lot in the coming days. Let us move to the next news item. Okay, there is an article in the Hindu about Asia's preparedness to eliminate malaria by 2030. Globally, malaria के elimination का target है 2030. And in line with that, India ने भी अपनी country में malaria elimination के target set किए हैं. Zero indigenous cases by 2027 and full national elimination by 2030, which is the same as the global target. Now let us talk about what is malaria. Malaria क्या है? It is a vector-borne disease. कैसे होता है? By the bite of an infected female Anopheles mosquito. इसके bite से malaria spread होता है. It is a vector-borne disease. Now, the article talks about a report which was released last year about the Global Malaria Report 2025, which was released by WHO in 2025. अब उस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी? उस रिपोर्ट ने बोला था estimated 282 million cases are there worldwide as per 2024, and clearly there is a huge gap. Significant number of deaths also happen annually. African region has the heaviest burden among all the areas. और उन्होंने बोला था, एक आइडेंटिफाई किया था एक रिस्क, एंटी मलेरियन ड्रग रेजिस्टेंस. We all know that anti-drug resistance, antibacterial drug resistance is becoming a major risk crisis, major threat in all diseases. इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि मलेरिया की जो ड्रग्स हैं उससे भी ह्यूमंस ने इम्यूनिटी बिल्ड कर ली है, एक रेजिस्टेंस बिल्ड कर ली है, विच वाज आइडेंटिफाइड एज अ बिग
threat to malaria, a big threat towards our elimination of malaria by 2030. Let us now talk about India related findings and what the article talks about related to malaria. उन्होंने बोला था in the Southeast Asia region, within that region, India carries the highest risk burden. There was also a time when India was a part of the WHO's high burden to high impact group. यानी हमारी कंट्री में बर्डन बहुत ज्यादा था, नंबर ऑफ केसेस डिटेक्टेड बहुत ज्यादा थे, उसकी वजह से डेथ्स भी बहुत ज्यादा थी, फेटलिटीज वर वेरी वेरी हाई. बट स्टार्टिंग 2025 2015 से लेकर 2023 तक इंडिया ने डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया है, और 2024 में इंडिया एग्जिटेड दिस ग्रुप कॉल्ड द हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट group, which was a major milestone in our fight against malaria. अब इंडिया ने वो कैसे किया? Several districts in our country, more than 120 districts, now show zero malaria cases. How did that happen? India's dedication towards test, treat and track. ये 3 T's हमने अपनाए under several programs such as the intensified malaria elimination projects. हमने ये approach को adopt किया, test, treat and track, and that is how we are on track towards eliminating malaria. The article that was in the news, ये हमें बता रहा था, it was trying to check the feasibility of us reaching our global elimination target. The article talks about several progresses. उन्होंने बताया है इंडिया के एग्जाम्पल से कि हाँ बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कोई डिजीज नहीं है, कोई मलेरिया नहीं है, बट वो कह रहे हैं फिर भी अभी एफर्ट्स लैकिंग है. द आर्टिकल स्पेसिफिकली टेल्स यू कि जो हमारा 2027 का टारगेट है ऑफ जीरो इंडिजिनस मलेरिया केसेस, हम मे बी उसको अचीव ना कर पाए, वी आर स्लाइटली ऑफ ट्रैक, but it says that we have the capability, we have the systems in place, we have the doctors in place, we have all the required technologies and capabilities in place to achieve our 2030 elimination target. So you all must go ahead and give all these news a read. आपके points for prelims and mains दोनों strengthen होंगे, and I hope with this analysis we are able to identify the points that we have to cover from examination point of view. So that will be all for today, students. Thank you very much. Hope you keep reading. Please continue, please go back and read these news items again. Thank you.